Hello everyone. So our topic for today is chapter number 12, field trip. Okay, now what do you mean by field trip? Field trip is basically visiting a particular place and getting to know information regarding it. Okay, कि आप कोई place को जब visit करते हो and वो place के बारे में सारी information निकालते हो, that is called as field trip. So your school sometimes do take you all like for like 1 year में once, or in 6 months twice. That is how school take you to visit different industries or anything. It can be any particular office through which you go visit and get information regarding the same. But since now during this pandemic, I don't think so any field trip must be taking place, but we will see कि वो कैसे होता है, क्या होता है, and what all information is required. Okay, the field trip is an important method of geography. Through field trip, one can get a first-hand experience of geographical factors and processes. Why first-hand? Because you physically go there and see everything, right? So practically आप जाके देखते हो. That is why you get the first-hand experience. Geographical concepts can be understood. जो आप लोग अब तक सिर्फ बुक में पढ़ते हो वो वहाँ पे प्रैक्टिकली जाके यू कैन सी एंड अंडरस्टैंड. सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरियस कॉन्सेप्ट्स. Geographical field trips are useful for understanding the relationship between man and environment. It is essential to plan the field trip according to the topic, place, duration of the visit. It basically shows how man and environment are working together. How we like if you take an example of any industry you are visiting, so how raw material is being extracted from the environment, and then how labors वहाँ पे जो labors है वो काम कर रहे हैं. So it shows you the connection between environment and labor. Also, you when you decide to go there, you have to keep certain things into mind. It's like you need to see which industry you are taking on to, वहाँ पे place कैसी है, what is the duration, how much time it will take, and all of these factors should be considered and then plan a field trip. One of the most important objective of a field trip is to pay a visit to an office in order to understand the kind of work done there. As I said you earlier, because you need to know how things are working on, and for that purpose you are being taken to a office where the person who is in charge explains you how the process and how the work is being done there. Different types of information are collected during a field trip. As I said you all, main काम क्या होता है, you need to know कि how things are working there. For this purpose, a questionnaire is prepared. Okay, questionnaire मतलब क्या? It is basically a list of questions which you have. Now let us take an example. यहाँ का एक example लेते हैं. यहाँ पे the field trip is taken to an election division office. के जो election held होते हैं ना हमारे, उनका ऑफिस में उनको लेके गए हैं. तो अकॉर्डिंगली व्हाट ऑल क्वेश्चंस यू विल प्रिपेयर, वो आपको पहले से प्रिपेयर करना होता है, सो दैट यू गेट अ क्लियर आइडिया व्हाट थिंग्स आर वर्किंग ऑन, राइट. इफ आई से यू दैट आई एम टेकिंग यू ऑल टू अ फील्ड ट्रिप फॉर अ से क्लॉथिंग इंडस्ट्री. ओके, एक इंडस्ट्री में लेके जा रही हूँ जहाँ पे क्लॉथ बन रहा है, तो आप क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो. सो यू कैन प्रिपेयर क्वेश्चंस, राइट. लाइक यू कैन प्रिपेयर क्वेश्चंस एज इन हाउ, लाइक फ्रॉम वेयर डू यू गेट दिस क्लॉथ, then how it is prepared, what all designs are made on it, is it how is the material of the cloth decided, and all of these questions, right. तो बहुत सारे questions mind में आते हैं, and when you even go there, when you see the work, then also you get many questions. So that is how questions are being prepared, so that it is easy for the person in charge also to answer. After compiling the information, a report is prepared. फिर once you visit there, एक report writing होता है. आपको report लिखना पड़ता है कि आप आपने कैसे वो place के बारे में what all things you have understood. A short report. Okay, report में you mention things in a summary pattern. एक short form में आप prepare करते हो. Preparation for the field trip. A copy of the questionnaire, a notebook, camera, pen, pencil, etc. are an essential part of the kit. Okay, that whenever you are going for a field trip, list of questions that you have prepared, a notebook and pen, pencil to write. अगर वहाँ पे आपको कोई वहाँ पे you get to know so many things. So it is
very much important to take pen and pencil with you, paper pencil, so that you can jot down things, and camera so that you can capture pictures or you can capture videos. Prior permission should be obtained from the concerned office before fixing the date and time of the visit, right? Prior is पहले से आपको permission लेना पड़ता है. You need to ask for the permission पहले से. ऐसे नहीं ना अचानक में मेरे I'll take my group of kids and I'll go there and they are not aware only. So it should not be like that. Firstly, you need to ask permission and fix particular date and time on which you are going to bring your kids there. Care should be taken not to damage anything during the course of the field trip, right? एक हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है दैट हमारे वजह से वहाँ के उनके कोई इंडस्ट्री या उनका कोई भी मटेरियल को हार्म ना पहुँचे. In this lesson, a sample questionnaire regarding a visit to the election office has been provided. Please go through this questionnaire. This kind of questionnaire is used for obtaining information from an office. So यहाँ पे हम लोग को example दिया है election division का कि if you are going to a place like election division के office में आप जा रहे हो तो what all type of question you will ask. जैसे questions पूछना ज़रूरी होता है because field trip एक main motto क्या है? It's not like a picnic dear. It's like you go there to collect information, right? So questionnaire is a necessary important thing कि आपको करना ही पड़ता है वैसा. On the basis of following questions, you can prepare your own questionnaire for a visit to a different places. Example, तलाटी office or a visit to a small industry. तो यहाँ पे हम लोग को election का example दिया है. वैसे in the similar way, while reading this question, you will understand that okay, what kind of questions you need to ask, and then you can prepare one of the questionnaire regarding any small industry or तलाटी office के तलाटी office भी जो होता है तो वहाँ पे भी you can ask, like if you have any तलाटी office near your area also, you can go there, you can ask them that how things are working, why do you कि ये सारी चीज़ें क्यों चाहिए, कहाँ से आप लोग मटेरियल लाते हैं, all that you can ask. Okay. Question. Now let us see the questions which they have prepared for election division office. Okay, so the first one is the name of the office. कि आप कौन से ऑफिस में जा रहे हो वहाँ का नाम आपको पता होना चाहिए. What is the designation of the chief at this office? कि यहाँ पे जो chief है उनका designation क्या है. Okay, उनका पोस्ट क्या है, कौन से मतलब डेजिग्नेशन समझते हैं ना आप लोगों के, उनका पोस्ट कौन से लेवल पे और वैसे इतना ही क्यों है वैसा. What are the different duties performed by this office? कि ये जो ऑफिस है इलेक्शन ऑफिस ये कौन कौन सी ड्यूटीज़ फॉलो करता है, कि कौन कौन सी ड्यूटीज़ निभाता है. who directs the work carried out in the election division? Okay, कि election division में जो सारा काम हुआ है, so who is the one who directs the work, कि कौन आपको direct करता है, कि okay, basically who leads the work you can say. Which are the various elections conducted through this office? कि ये election office है तो ये office से कौन कौन से elections take place करते हैं. So all of these are like basic questions you can ask. Similarly as I said कि आपको अगर एक example लेना है तो you can take any small scale industry का example, कि any industry you are visiting, any industry which you like, clothing industry हो गया, milk industry हो गया, milk production industry, any industry. So you go there and आप कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछोगे वैसे आपको एक क्वेश्चनर का लिस्ट बनाना है. Okay, now you are understanding what type of questions you need to make by reading these 5 questions. Next, from where do they get the additional manpower required during elections? के elections के वक्त कैसे बहुत सारे booths होते हैं, right? So for that for every booth you required one person to cooperate. So manpower ये लोग कहाँ से आप लोग लाते हो? That kind of question you can ask. How many days prior to election is the notice given? कि election के पहले, prior is पहले कितने दिन पहले आप लोग notice भेजते हो? That also you can ask. Who does the work of enlisting new voters and updating the electoral list? कि जो new voters आए हैं उनका updation का list अभी कैसे होता है? Suppose now you guys are turning 18. Suppose so you are the one who are new voters, right? तो उनका list कौन बनाता है, उनकी list को update कौन करता है? You can ask them.
who conducts the training programs for the elections? Most of the times, they conduct training programs so that people understand how to vote and all that stuff. So who does that? Is it is it the work under your office or any other office does that? So all such kinds of question you can ask. Which are the license issued by the office during elections? के इलेक्शन के वक्त कौन कौन से लाइसेंस इशू करते हैं आप जैसे ऑफिस में से? How many people are appointed at the polling center during voting? As I said, के polling center पे there are people who are being allotted. So how many are allotted? On what basis are they allotted? You can ask. When is the voting of officials appointed for election duty taken and how? Okay, so officials जो appoint कर लिए उनका election duty फिर कैसे होता है, क्या process होता है? You can ask. What are the timings of the voting? Who decides the timing of the voting? You can ask all such questions. Is the timing of voting extended under special circumstances? के कोई special circumstances हुए, समझो 5 बजे तक का timing है, but there are still people out there who are ready to vote. So in such special circumstances या कुछ भी हो गया, समझो जो voting booth है वो बिगड़ गया and 1-2 घंटे के लिए वो चला नहीं तो उतना time waste हो जाता है. तो all of these under special circumstances, do you extend the voting timing? So all of these questions you can ask. समझ रहे हो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछना है? टेल द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ वोटिंग मशीन के वोटिंग मशीन का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? यू कैन आस्क. वोटिंग मशीन इज ऑल्सो नोन एज EVM. ओके. हाउ आर वोटिंग मशीन्स ऑब्टेन्ड कि वो आपको कैसे मिलते हैं, क्या क्या प्रोसेस है? सिंस व्हेन आर द वोटिंग मशीन्स बीइंग यूज्ड? पहले तो कैसे देयर यूज्ड टू बी दैट बॉक्सेस, बैलेट बॉक्स होते थे जिसमें लोग अपने आंसर्स डाल देते. नाउ वी हैव वोटिंग मशीन्स, राइट? सो हाउ इज़ लाइक फ्रॉम व्हेन, जब से इन्वेंट हो गया था EVM तभी से आप लोग यूज़ कर रहे हो या आपको बाद में मिला? ऑल सच काइंड्स ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क. What actions need to be taken if the voting machine become faulty? As I said you all के under special circumstances अगर voting machine नहीं चल रहा है तो what all actions are being taken? Even you can ask this. How was voting conducted earlier? As I said you all, ये तो हम लोग ने पढ़ा. आप लोग का ही चैप्टर था क्या इलेक्शन प्रोसेस के 10th स्टैंडर्ड का था? आई डोंट रिमेंबर. बट इलेक्टोरल प्रोसेस होता है कि पहले के टाइम में देयर वाज बैलेट सिस्टम, वो बॉक्स रहता है उसमें लोग चिट्ठी पे अपना वोट डाल के जाते थे. फिर वो चिट्ठी के लोग पीपल यूज टू काउंट कौन सा मेजॉरिटी आया एंड दैट इज़ हाउ वोटिंग्स वो कंडक्टेड इन अर्लियर पीरियड. वैसा. सो इफ़ यू नो द आंसर्स वेल एंड गुड, बट इफ़ यू डोंट नो एंड इफ़ यू आर क्यूरियस टू नो एंड इलेक्शन ऑफिसर है वो आपको ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते, देन यू कैन आस्क ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस. द कोड ऑफ कंडक्ट is applicable for how many days before and after the election? Now what do you mean by code of conduct, student? code of conduct समझते हो आप लोग? कोड ऑफ कंडक्ट को क्या बोलेंगे? इट इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉर्म्स, रूल्स ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टी या पूरा ऑर्गेनाइजेशन का दिया होता है. इट इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स आप लोग बोल सकते हो. तो वो कितने दिन पहले एप्लीकेबल होता है, कौन कौन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है? यू कैन आस्क ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, राइट? सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन यू नीड टू प्रिपेयर एटलीस्ट अ बंच ऑफ 20 to 25 to 30 क्वेश्चंस वन इंडिविजुअल स्टूडेंट शुड प्रिपेयर सो दैट उतना इन्फो उसको मिलेगा. विच डिपार्टमेंट डू यू सीक हेल्प टू कंडक्ट द इलेक्शंस? कि अगर आप लोगों को नहीं जम रहा है तो कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिसकी आप हेल्प लेते हो? इन विच सर्कमस्टेंसेस आर बाय इलेक्शंस हेल्ड? कभी कभी पता है बाय इलेक्शंस होते. बाय इलेक्शन समझते हो बच्चे लोग आप लोग? बाय इलेक्शन किसको बोलते हैं? मतलब बेसिकली क्या होता है, कभी कभी एक स्पेशल इलेक्शन समटाइम्स अ स्पेशल इलेक्शन इज़ बीन हेल्ड बिटवीन द रेगुलर इलेक्शंस. जो नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं उसी में एक स्पेशल इलेक्शन हेल्ड होता है इन ऑर्डर टू फिल अ वैकेंसी. कि अगर कोई वैकेंसी है, सीट खाली है, उसको भरने के लिए एक बाय इलेक्शन हेल्ड किया जाता है. सो दे आर आस्किंग क्वेश्चन. जो पहले तो आपको पता होना चाहिए बाय इलेक्शन क्या है, तो फिर आप उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो, राइट? तो कभी भी व्हेन यू आर विजिटिंग एनी फील्ड ट्रिप के या फील्ड विजिट पे आप जा रहे हो तो कौन से प्लेस पे जा रहे हो ना, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उसके रिलेटेड जो सारे टर्म्स है वो आप पहले से ही अगर आप पहले से ही पढ़ के रखते हो तो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल टू यू.
सो इन विच सर्कमस्टेंसेस, ऐसा कौन सा सर्कमस्टेंसेस होता है जब बाई इलेक्शंस हेल्ड होते हैं. यू कैन आस्क देम व्हाट डू यू डू इफ़ द कैंडिडेट गेट्स इक्वल वोट. ये इट इज़ अ नाइस क्वेश्चन. समटाइम्स अगर दो पार्टी है, दोनों को इक्वल वोट हुआ, फिर आप क्या करते हो. यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन. हु डिक्लेयर्स द एंड रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन इन द पब्लिक. के ठीक है, आपने वोटिंग्स काउंट कर लिए, मेजॉरिटी आपको मिल गए. सो हु इज़ द वन हु डिक्लेयर्स द आंसर, लाइक हु डिक्लेयर्स द रिजल्ट टू द वोटिंग. पब्लिक को फाइनल रिजल्ट कौन बोलता है. डज द ऑफिस मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द अर्लियर इलेक्शन. कि आपका ये जो ऑफिस है वो पहले जो सारे इलेक्शंस हेल्ड हुए हैं, डू यू हैव रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ऑफ देम. डू यू इशू सर्टिफिकेट्स टू द इलेक्टेड कैंडिडेट्स. हु साइन दोज सर्टिफिकेट्स. कि जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स है उसको आप लोग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हो क्या. एंड इफ़ यू प्रोवाइड देन द सिग्नेचर जो दिया रहता है सर्टिफिकेट पे, तो हु sign that certificate. So all of like these are the bundles of questions जो इलेक्शन ऑफिसर के लिए अपने टेक्स्ट बुक ने बनाया था, राइट. सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन ask or you can prepare. Okay, now the report writing, as I said you all, once you get those information, you need to write it in the form of report writing. Report writing is basically a short summary which you describe. आप लोग ने इंग्लिश में बहुत बार किया है, right, report writing. So that is how you need to just write a report writing of that particular place. After you collect information from the office you visited, you have to write a report. You can use the map, tables and layouts, graphs, pictures and photographs for the same. Okay, you can see फिगर 10.1 में फोटो दिया है विजिट टू द इलेक्शन ऑफिस. दैट यू कैन से सी these are our classmates and that is how we visited the election office. The sub question अरे the figure 10.2 is the map of the electoral constituency. Okay, कि जो electoral constituency है उसका मैप है बेसिकली. देखो, इफ़ यू सी इट केयरफुली, it's like just give me 1 second. Yeah, कौन से इलेक्शन, कौन से स्टेट में कौन सा इलेक्शन हुआ, who were being elected at that particular time, which party was elected. You can draw such maps so that it is easy representation. कि कोई जो पढ़ रहा है उसको easily समझे, उसके लिए आप लोग मैप भी बता सकते हो. Sample of electoral roll. Okay, this is like the sample. As I said you all, जो न्यू मेंबर्स आते हैं ना, जैसे कि न्यू वोटर्स आते हैं 18 ईयर्स के, तो उनका नाम ऐसे ही लिस्ट में आता है. यार जिन्होंने वोट कर दिया उनका नाम ऐसे ही लिस्ट में आता है. फिर वंस यू आर डन वोटिंग दे टिक इन फ्रंट ऑफ योर नेम. तो ऐसे ही लिस्ट में आपका नाम आता है, आपकी डिटेल्स होती है एंड दे गिव यू अ पर्टिकुलर नंबर. वैसा होता है. एंड फिर आपको कौन से आपके एरिया में कौन से उसमें जाना है वो सब आपको बताते. तो ऐसा एक लिस्ट एग्जाम्पल है, तो आप वैसा एग्जाम्पल दे सकते हो. एंड द लास्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. के जो वोटिंग मशीन है उसका फ़ोटो है कि कैसे अंदर जब वोटिंग आप करते हो तो ऐसा मशीन होता है, तो उसका फ़ोटो दिया. तो यू कैन क्लिक सच पिक्चर्स एज वेल एंड यू कैन शो इट इन योर रिपोर्ट राइटिंग. सो व्हाट ऑल पॉइंट्स यू हैव टू मेंशन इन योर रिपोर्ट राइटिंग. सो द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन. यू नीड टू गिव एन इंट्रोडक्शन. ओके, दैट वी आर a particular batch of our school visited this particular office and where is this office. एक short introduction आपको देना पड़ता है. Personal working in the office, then you have to write के what all work does the office does. के जो ऑफिस में आप गए या जो इंडस्ट्री में आप गए वो क्या क्या काम करता है. नेचर ऑफ वर्किंग इन द ऑफिस, दैट कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से लोगों को क्या क्या ड्यूटीज़ अलॉट किया है. यू कैन राइट ऑल ऑफ दीज. प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड और सल्यूशंस के व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स आर दोज मेंबर्स ऑफ द ऑफिसर्स फेसिंग एंड कौन कौन से सल्यूशंस उन्होंने निकाले, या अकॉर्डिंग टू यू व्हाट ऑल सल्यूशंस कैन बी देयर टू देयर प्रॉब्लम्स. यू कैन राइट. एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या, बेसिकली यू कैन राइट कि व्हाट आर योर रिव्यूज़ ऑन देम.
okay. But basically see, acknowledgement when you write in report writing, उसमें acknowledgement is like एक पेज होता है, बच्चा लोग एक पेज आप लोग acknowledgement का डालते हो in your report writing. It is basically vote of thanks to all those who have helped you. ओके सो ये रिसर्च करने में या वे फील्ड विजिटिंग में ऑल ऑफ दोज पीपल हु हैव हेल्प्ड यू, उसका आप लोग एक नाम लिख सकते हो. जैसे यू कैन राइट द नेम ऑफ योर टीचर्स, द मेन ऑफिसर्स एट दैट ऑफिस हु हेल्प्ड यू फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशंस, all of them you can write it down in the acknowledgement. Sixth one is list of reference. okay, list of reference मतलब कैसे कि आपने कोई information लिखी है आपके report writing में, तो अगर आपने उसको गूगल से रेफ़र किया या सोर्स ऑफ इंटरनेट या फ्रॉम न्यूज़पेपर, कहाँ से भी आपने इंफॉर्मेशन गैदर किया है, तो यू कैन राइट लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस के ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मैंने न्यूज़पेपर से निकाला या मैंने मैगजीन से निकाला या वैसा कुछ. तो यू कैन राइट लिस्ट ऑफ रेफरेंस दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपने कहाँ से रेफ़र किया है. okay, so that is how you present a report writing. Present the report in class either in individually or in group. okay, the students of particular school along with their teachers made a field visit to the Tehsildar office. They prepared a questionnaire for understanding the entire election process. After meeting the chief electoral officer, they collected this information. After compilation and preparation of report, they made use of it for the school elections. के ये सारा information उन्होंने निकाला, and जो school में वो लोग elections करते हैं ना, maybe when you select a particular anything, like अगर आपको कोई monitor select करना है या any duties which have been allotted in school, तो जब आप school में election करते हो तो all of these information would be useful in your school election. okay, वैसा. Project. Prepare a plan for a field trip of your class to a place of a special interest, visit to an office and prepare a questionnaire. Okay, so this is a project which is given over here from my side. Since this chapter does not have any exercise question, I would like to give you all a homework. My homework is you need to prepare a list of questionnaire including 25 to 30 questions and list of questionnaire तो हो गया, and a report writing in which you have to write things when you are like if you are visiting industry. okay, it can be any industry you want. आप कोई भी industry ले लो, मार्बल का industry ले लो, clothing industry ले लो, food production का कोई भी industry ले लो. I need you all to write 25 to 30 questionnaire. You need to prepare a list of 25 to 30 questionnaire which you will be asking in that particular industry and a short summary report. रिपोर्ट में ये सारे 6 पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया. या understood? So yeah, that was it for today's session. That is how we come towards the end of our chapter. I hope this is like 9th or 10th जो है map scale and field visit. This is like a practical geography. okay, इसमें कैसे है कि practically क्या होता है वो आपको समझना है. okay, so yeah, that is how we come towards the end of our chapter. I'll see you all in the next one. Till then, bye bye and take care. But make sure you are submitting your homework on time. Bye, take care.